सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने ये परमार सर की फैडमैन बुक का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग इस मेडावल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको भी इस बुक का मतलब हर पार्ट करना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं मेडावल हिस्ट्री से। यहाँ पे ये दिया है, पहले दिल्ली सल्तनत है, फिर विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम है, मुग़ल एम्परर है, मराठास हैं, और ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है। तो यहाँ पे इस मैप दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आगे बुक में दिया है। तो पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत पीरियड 1206 एडी से 1226 एडी तक है। फॉरेनर इन्वेजन यहीं से स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन 712 एडी। द इन्वेजन टुक प्लेस इन सिंध पार्ट ऑफ इंडिया। ही केम फ्रॉम अरब एंड किल्ड राजा दाहिर, फर्स्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध। ही He was the first to introduce जजिया इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उसके बाद आते हैं मोहम्मद ऑफ गजनवी, सेकंड इस्लामिक, फर्स्ट तुर्की इन्वेजन 998 एडी से 1030 एडी। तुर्क केम फ्रॉम तुर्कमेस्तान। ही अटैक्ड 17 टाइम। द फर्स्ट अटैक टुक प्लेस इन 1001 एडी ड्यूरिंग द रूलर ऑफ जयपाल। बैटल ऑफ पेशावर वॉज फॉट बिटवीन गजनवी आर्मी एंड राजा जयपाल। Ghaznavi invaded Somnath in his 16th attack 1025 AD, and the 17th attack was the last attack 1027 AD. Court language of Turkish was Persian. Battle of Waihind, a series of conflict between Ghaznavi and Hindu Shahis ruler, death 1030 AD. Writers during the reign of Muhammad of Ghaznavi: फिरदौसी, शाहनामा, अल-बिरूनी, तहकीक हिंद आल्सो नोन एज किताबुल हिंद। यहाँ से फिर मोहम्मद गौरी होता है। थर्ड इस्लामिक इन्वेजन एंड सेकेंड तुर्क इन्वेजन 1175 एडी एंड 1206 एडी। पर्शियन ने मुज़म्मल-उद-दीन मोहम्मद। His first attack took place in 1175 AD in Multan and 1178 AD in Gujarat, where he was defeated by Mulrada II and Bhima II and their mother Naki Devi. Gauri attacked Delhi, which was then ruled by Prithviraj Chauhan. Battle between Prithviraj and Gauri. First battle of the Rhine 1191 AD, owned by Prithviraj III, Prithviraj Chauhan. Second battle of the Rhine 1192 AD, owned by Gauri. Kutubuddin Aibak, commander of Gauri, helped him in second battle of the Rhine. Jaychand is said to have invited Muhammad Gauri to attack Prithviraj Chauhan. Writer in Prithviraj Court: Chandrabardai. He wrote Prithviraj Raso according to his epic poem Daughter of Jaychand, king of Garhwal. Sangyogita was married to Prithviraj Chauhan. Battle of Chandaur 1194 AD. This battle was fought between Gauri and Raja Jaychand, where Gauri won the battle. Slave of Gauri: Kutubuddin Aibak, Yildiz Kubacha, Bukhtiyar Khilji. He destroyed Nalanda dynasty. Jaychand मुझे की तोड़ा. You can see the memes. और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी है, और ये यहाँ पे टिक दिया है। सब खतरनाक थे सारे लोग। तो यहाँ से आप इसका वो याद करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी कभी पूछ लेता है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 AD and 1290 AD तक. This dynasty is also known as Mamluk dynasty. The ruler belonged to Ilbari tribe, Shamsi tribe.
Qutbuddin Aibak 1206 AD से 1210 AD. He ruled from Lahore. It was the capital city. He was given the title of Lakh Baksh, the giver of lakhs. Death 1210 AD while playing Chaugan, now known as polo. Architecture constructed by him. Mosque Qutbul Islam at Delhi and Adhai Din Ka Chopra at Ajmer. He also began construction of Qutub Minar. He was only able to complete the constructions of basement in honor of the Sufi Sant Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. He patronized writers like Hasanun Nizami, author of Tujul Masir and Fakhruddin. Quwwat-e-Islam. It is made in corbel arch technique. Adhai Din Ka Chopra. It has a Jain monasteries. और ये है कुतुब मीनार. It is an Indo-Islamic structure having 5 stories, 73 meter height. Qutub Minar was built by Qutbuddin Aibak, laid foundations. Iltutmish added 3 more stories to it. Firoz Shah Tughlaq prepared and built the top stories. Shamsuddin Iltutmish 1211 AD से 1236 AD. He was son-in-law of Qutbuddin. He shifted his capital from Lahore to Delhi. He saved Delhi Sultanate from the wrath of Chengiz Khan. Chengiz also attacked Tongshan region in 1219 AD. He died in 1227 AD. Nizamul Mulk was his Wazir, Prime Minister. He patronized scholars like Minhaj Siraj. He set up the official nobility of 40 loyal Slavs known as Chahalgani. These were Turkish Slav. He introduced silver coin Tanga and copper coin Jital. He introduced the Ekta system. Under this, a part of land was given to military commander known as Iqtadar or Mukti. फिर यहाँ से आती है रजिया सुल्तान 1236 AD से 1240 AD तक. He was the daughter of Iltutmish. He was the first and the only woman ruler of the Delhi Sultanate. Al-Dunya, governor of Bhatinda, refused to accept suzerainty of Rajia. Rajia and Yaqut, an Ethiopian Slavs, marched against Al-Dunya. Al-Dunya murdered Yaqut and imprisoned Rajia in Quila Mubarak of Bhatinda. Later, Al-Dunya and Rajia got married. In 1240 AD, Rajia and Al-Dunya became the victim of conspiracy by the Khokar tribe and were assassinated near Kaithal, Haryana. Ghiyasuddin Balbal 1266 AD से 1287. He was earlier a naib under Nasruddin Muhammad. He broke the power of Chalisa, abolished Chahalgani system and restored the prestige of the crown. He established the military department Diwan-e-Arj. Title taken Jilne-Ilahi, Shadow of Allah and Ulugh Khan. Balban considered himself as a descendant of Afrosiab, original name Bahauddin. He introduced sajda, prostrations before the monarchy, and pabos, kissing the feet of monarch, as the normal form of salutations. He started blood and iron policy. He started Nowruz, Iranian or Persian New Year, in Delhi Sultanate. Tughril Beg, the governor of Bengal under Sultanate Balban, rebelled against him and declared himself as an independent ruler of Bengal in 1279. Later, Balban assassinated by him. Kaikambad 1287 AD से 1290 AD. He was the last ruler of Slav dynasty and grandson of Balban. Important officer, Wazir, Prime Minister. Amir collected revenue. Amir, governor of Pargana.
नाइब इंचार्ज ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फाइनेंस। मुक्ति वाले इक़्तिदार दे होल्ड एकता। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है और कल हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।